बीआरएस के वर्किंग सदर के तारक रामाराव ने कहा कि लोकसभा की नशिस्तों में इजाफे का मियार रियासतों की जीडीपी में शिराकत को बनाया जाए या फिर मौजूदा तादाद को बरकरार रखा जाए। केटीआर ने तमिलनाडु के चेन्नई में मुनक़िदा गैर भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरानी वाली रियासतों के नुमाइंदों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक अहम इजलास में शिरकत करके खिताब करते हुए कहा कि जुनूबी रियासतें मुल्क की जीडीपी में 36% हिस्सा डाली हैं, इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में असेंबली हल्कों की हदबंदी आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ एक्ट के मुताबिक होनी थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया क्योंकि बीजेपी को कोई सियासी फायदा नहीं था। ताहम जम्मू और कश्मीर में ये अमल मुकम्मल कर लिया गया, जिससे वाज़ेह होता है कि जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। केटीआर ने सख्त अल्फाज में कहा कि जो रियासतें मुल्क को पीछे खींच रही हैं उन्हें नवाजना दुरुस्त पॉलिसी नहीं। अगर भारत को 2047 तक एक आलमी ताकत बनना है तो तरक्की याफ्ता रियासतों की हौसला अफजाई करनी होगी, ना कि उन्हें सजा दी जाए। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो तरक्की याफ्ता रियासतों के साथ मसावी सलूक करें और उन्हें सियासी मुफादात की बुनियाद पर नजरअंदाज ना करें। The percentage of population has increased, and my brother gave a very nice presentation on what will happen if we go on with the population basis. The only point I would like to make here, if seats are redistributed purely on pro rata population basis, states that have failed to control population will be rewarded, as was put eloquently by Vijayan sir. This is a perverse reward for somebody who has not performed and for somebody who has diligently followed the guidelines of Government of India. Punishing us with reduced representation is certainly discriminatory. India's democracy must be built on progress, governance and economic contribution, not just population. A fair system should reward progress and encourage development in lagging regions. If India has to become a superpower by 2047, 100 years after we achieved independence, we must empower those driving the growth, not silence them. We must empower those who have done well over the last 7 decades and not punish them. Why do we not trust the words of Union Home Minister who says it will be pro rata and nobody will lose representation? I'll give you a classic example of Telangana. When the new state of Telangana was formed in 2014, we were given a promise in the State Reorganization Commission that the delimitation exercise will be taken up in both Telangana and Andhra Pradesh, and the number of seats in Telangana would be raised, MLA seats, that is, assembly seats, from 119 to 153 in Telangana, from 175 to 225 in Andhra. 11 years since then, and it's an act of the parliament, but no action has been initiated because it is inconvenient for BJP to increase the seats. Where it is convenient for them in Jammu and Kashmir and Assam, they've gone ahead and conducted delimitation. Where it is inconvenient for them in Andhra and Telangana, they've kept it aside. Why do we not trust them? Because, their action, their history speaks otherwise. Today, the union government has indulged in cesses. They've come out with cesses, a formula which basically deprives the states of devolution, of a rightful share in devolution. It's a constitutional right. Therefore, we have apprehensions. Therefore, we have a lot of doubts about the center's intentions.